Welcome back, dear students. This is Dharamveer Singh, biology faculty of your school. Students, we are discussing about chapter biological classification, that is second chapter of class 11th biology. In this chapter we discussed two parts. First part we was discussing about the different type of classification systems, like first time living world classified philosophically by the Aristotle. After that, Linnaeus classify into two groups, Plantae and Animalia. Haeckel comes and classify into three different groups, Copeland into four different groups, and the most advanced that is we discussed here is classified by the R.H. Whitaker, that is five kingdom classification. And this five kingdom classification include all the organism excluding वायरसेस. बेटा वायरसेस को छोड़कर अप्रॉक्स सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इन्होंने कोलैबोरेट करे. फर्स्ट किंगडम दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द R.H. Whitaker was Monera, and we discussed everything about Monera. In Monera, all the prokaryotic organisms are kept. In Monera, bacteria, if we going for the differentiation, then mainly two type of organisms are present here. One is bacteria and another is mycoplasma. Then what is basic difference between the bacteria and mycoplasma? Bacteria also have some differentiation, but the basic difference why mycoplasma we studied differentially from the bacteria. हम बेटा mycoplasma को bacteria से अलग क्यों पढ़ते हैं? Because the presence of and absence of cell wall. Bacteria have cell wall, but mycoplasma don't have cell wall. This mycoplasma don't have cell wall, but it have three layered. What? Three layered cell membrane. Three layered cell membrane. This unique feature make mycoplasma antibiotic resistant. बेटा ये थ्री लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना और सेल वॉल का एब्सेंस होना, द यूनिक फीचर दैट इज फाउंड इन द माइकोप्लाज्मा. दैट्स व्हाई माइकोप्लाज्मा इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक हैव देयर receptors on cell wall. Okay, most of the antibiotics have their receptors on cell wall. If cell wall is absent, then antibiotic don't found any type of receptor. That's why they are antibiotic resistant. Next thing is that, so this is the basic difference between the bacteria and mycoplasma. Next thing is that mycoplasma are the organism that can survive without oxygen, means they are anaerobic organism. This is an anaerobic organism, can survive without oxygen. Next thing is they are smallest living organism. बेटा यह दुनिया के सबसे छोटे smallest living organism अभी तक डिस्कवर करे गए सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. थर्ड थिंग, दे आर डिसीज कॉसिंग मीन्स पैथोजेनिक. डिसीज कॉसिंग cause diseases in plants, in animals as well as in plants. They can cause disease animals as well as in plants. In animals, the very famous disease that is walking pneumonia, and in the case of the plants, Daf rice disease.
क्या होता है बेटा, डाफ राइस, इसमें क्या होता है, धान का पौधा छोटा सा ही रह जाता है। एंड इन निमोनिया, निमोनिया इज ए रिस्पिरेटरी डिसीजेस, बेटा क्या करता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन करता है। सो दैट व्हाट हैपेंस, द रिस्पिरेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड। तो बेटा एनिमल्स के अंदर रिस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करते हैं, और प्लांट्स के अंदर जो डिसीजेस होती है उसमें से एक का एग्जाम्पल है डाफ राइस डिसीज। So I think it's all about the mycoplasma, because we have discussed something in our last chapter, in our last class also। हमने बेटा कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और जो पार्ट्स बचे थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, वाई माइकोप्लाज्मा गेट दिस नेम माइकोप्लाज्मा, बेटा माइकोप्लाज्मा को ये नाम माइकोप्लाज्मा क्यों मिला, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन यू वाई इट गेट दिस नेम, बिकॉज ऑफ फंगल लाइक ओरिजिन, बिकॉज ऑफ fungal like origin। mycology study of fungi, mycology is the study of fungi, and this particular organism found in growing on the dead and decaying organic material। बेटा ये भी particular organism सड़े गले चीज़ों के ऊपर ग्रो करता हुआ मिला था। तो फर्स्ट टाइम पीपल कंसीडर्ड इट एज फंजाई, बट इट लैक्स सेल वॉल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंजाई एंड गॉट अ डिफरेंट नेम दैट इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। Those organisms that have fungus-like origin is known as mycoplasma। Okay, so I think it's all about the mycoplasma. Now we move on our next kingdom, that is Protista। Next kingdom, that is Protista। Okay, so here we will discuss about Protista kingdom। Protista। Okay, so kingdom Protista includes all eukaryotic organisms that are single cellular। Okay, kingdom Protista includes single cellular eukaryotic organism। There is very much diversification in the Protista, because we not clearly say that all the organisms are animals, all the organisms are plant, all the organisms are fungus, because it includes fungus, plants, animals. Some of the plants are algae or some other thing, fungus in the case of the slime molds, and some of the animals in the case of protozoa, means here a group that is protozoa, it includes all the animals, or we can say the organism that lack the cell wall, only have the cell membrane. So this is the basic about the kingdom Protista। Okay, so the kingdom Protista includes all the single cellular eukaryotic organism। What is the basic structure of eukaryotic organism? An eukaryotic organism have an cell, and inside the cell a well differentiated or well defined membrane bound organelle is present in center, that is known as nucleus। What is known as nucleus? This nucleus is surrounded by double membrane, an inner membrane and outer membrane, and the foldings of the outer membrane form a structure that is known as ER। What is known as ER? On the ER, Golgi body is present। What is present? Golgi body। Here some of the lysosomes and vesicles are present। Somewhere ribosomes are present। If it is a plant cell, then vacuoles are also present। Somewhere if it is a plant, then chloroplasts are present। Somewhere mitochondria and tubules etc. are present in the plant cell।
So, plant or animal both. So, the structure of an eukaryotic cell is that a central nucleus and along with nucleus some cellular organelles are present. Cellular organelles means those special type of structures that are present inside the cell and bounded by the membranes. बेटा ये कुछ वो स्ट्रक्चर होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक वर्क्यूल्स, लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. All these are the cellular organelles that are surrounded by the membranes. So this is the basic difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic organism like bacteria, mycoplasma don't have this type of the cellular organizations because they lack membrane bound nucleus and all the cell organelles. उनके अंदर बेटा कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं था और उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं था. Okay, so this is the basic difference. Okay, now we move on the next thing, that is classification. Means in Protista number of organisms are found. That's why kingdom Protista also classify into 5 different groups. These are as follows. Protista classify into 5 different groups. Number first, chrysophytes. Second, dinoflagellates. Third, chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids. Fourth, slime molds. And in last, protozoans. Anyone knows about what the means of protozoa? What is the means of protozoa? Proto means primitive. Proto means primitive and zoans means animals. Protozoa is a Latin word which means primitive animals or first originated animals that we discussed in the kingdom Protista. तो बेटा इसके अंदर क्या किया गया, सारे के सारे सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स को 5 डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया गया. पहले में क्राइसोफाइट्स, they are mainly algae. Dinoflagellates, they also contains algae. After that, euglenoids, that are partial animals and partial plants. Why they are partial animals and partial plant? Why they are partial animals and partial plant? I will explain you. After that, slime molds. Slime molds generally have food habit just like fungi. That's why initially they are considered as fungi, but later on they are form a separate group and they are don't explained in the fungi, or we can say that they are excluded from the fungi. And after that, protozoans or primitive animals. Protozoa also classify into four different groups. First is amoeboid protozoa. Flagellated protozoans. After that, ciliated protozoans. And one more that I can write it here, then it is sporozoa.
sporozoans. So we can say that protozoans are also classified into 4 different types. Here if we come on chrysophytes, then chrysophytes are explained, or we can say that classifying further into 2 groups. One is desmides, and another is diatoms. One is desmides and another are diatoms, though both are the algae and both are photosynthetic. Desmides are also known as golden algae. They are also known as golden algae. Okay, then what is the basic difference? Basic difference lies in the cell wall and their habitat. Basic difference lies in their cell wall and habitat. The habitat means they are प्लैंकटॉन्स. बेटा क्या होते हैं? डेस्माइट्स का जो गोल्डन एल्गा होते हैं प्लैंकटॉन्स होते हैं, और वाटर की सरफेस मेनली दे आर प्रेजेंट इन द सीज. बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैराइन वाटर हैं. सम ऑफ देम आर आल्सो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, fresh water, but most of them are marine. They are planktons. What are the planktons? Those plants that they are called as phytoplankton. Those plants that float on the water surface are known as planktons. But diatoms always present below the, or we can say bottom, in the bottom of oceans. So mainly golden alga are, we can say that, photosynthetic in nature. They are photosynthesized and form their own food. Some of the golden alga are also pathogenic. We can say that they are pathogenic in nature and cause death in fishes or kill the fishes. Example of such a alga is Rhymensium parvum that can kill fishes. And diatoms are chief producers. They are the chief producers in the oceans. They produces approx 20 to 50% of oxygen on earth. बेटा ये हमारे अर्थ की 20 से 50% तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. Next thing is that diatoms are also responsible for producing approx 50% of organic material of the ocean. बेटा ओशियन के बॉटम में अप्रॉक्स 500,000, लगभग 800 मीटर, कितना? 800 मीटर थिक, 800 मीटर थिक ऑर्गेनिक मैटर, 800 मीटर थिक ऑर्गेनिक मैटर को इन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है. दैट इज नोन एज डायटमेशियस अर्थ. इसी को हम बेटा क्या नाम देते हैं? डायटमेशियस अर्थ. And how this diatomaceous earth is formed? What happens? The cell wall of diatoms have a special type of symmetry, just like the soap box model. बेटा क्या होता है? ऐसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में सोप बॉक्स होता है, एक साबुनदानी होती है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करे हुए, और ओवरलैपिंग जो होती है इनके बीच में क्या हो जाता है? सिलिका डिपॉजिट हो जाता है. हियर silica deposited. Here silica deposited,
and when these diatoms are dyed, then what happens, all these cell wall with silica form diatomaceous earth. क्या बनाती है बेटा, diatomaceous earth, and they form approx 50%. How much? 50% of the organic material of the ocean. और ये ओशियन का लगभग 50% ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं. If we go for the structure of a chrysophyte, or we can say that golden alga, then I will give you an example of Onchromonas. Onchromonas, and its structure is just like heart shape. Onchromonas. Here too chloroplasts are present. This is a structure of Onchromonas, that is a golden alga, or we can say that desmide. जो बेटा एक desmide है, ये उसका structure है. So I think it's all about the chrysophytes. What are the chrysophytes? Chrysophytes generally contains all the algae, and the chrysophytes also divide to two classes on the basis of their food habit, cell wall and habitat. उनका बेटा सेल वॉल और हैबिटाट के बेस पे, बिकॉज कोई हमको पानी के ऊपर तैरते हुए मिल रहे हैं, उनको हमने एल्गी या गोल्डन एल्गा बोल दिया, डेस्माइट्स बोल दिया, और कुछ हमको बॉटम में मिल रहे हैं, उनको हमने डायटम्स बोला. तो उनके बेस पे इनको क्लासीफाई दो डिफरेंट पार्ट में किया गया था. आफ्टर दैट डेनोफ्लैजेलेट्स. व्हाट? डेनोफ्लैजेलेट्स. Dinoflagellates, students, dinoflagellates are also a special group of algae. बेटा इसके अंदर भी क्या आते हैं? algae ही आते हैं, सारे के सारे algae ही आते हैं. They are different into they are differentiated on the basis of colors present in them. They are either yellow or red, blue, green, etc. on the basis of different type of pigments that are present in their cell wall. बेटा क्या हो सकता है, ये different type के colors के हो सकते हैं, and these colors are provided by the pigments that are present in their cell wall. Okay, they are mainly marine. They are mostly marine. They have a special type of, one second, they are marine, means present in oceans and seas. Oceans and seas. What happens? They form a symbiotic relationship. They form a symbiotic relationship with, they form a symbiotic relationship with कोरल रीफ्स. बेटा कोरल रीफ्स के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं. दे हैव, इफ वी गो ऑन द स्ट्रक्चर, देन देयर स्ट्रक्चर हैव a special type of cellulosic strips. One second, a special type of cellulosic strips in their cell wall. बेटा क्या होता है? cellulosic strips means cellulose की बनी हुई plates होती हैं. They have cellulosic strips in their cell wall, and this cellulose is just similar to the cellulosic cell wall that are present in the higher plants. बेटा बिल्कुल वैसे ही सेलुलोज है जैसा कि हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट इफ वी गो ऑन अ स्ट्रक्चर, if we go on a structure, then I am giving the example of Cirsium, and it is made up of just like this. They have flagella. They also have flagella. That's why they are called as dinoflagellates. Means those algae that have flagella are known as dinoflagellates and are single cellular. Some of the dinoflagellates are expelled, or we can say that multiply as fast as they produces red tides in the oceans. बेटा कुछ dinoflagellates इतना फास्टली ग्रो करते हैं, इतना फास्टली मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि वो आपस में एग्रीगेट हो करके रेड टाइड्स बनाते हैं. इसको हम रेड सी भी बोलते हैं. एंड देन द एल्गी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड्स इज गानी Olex.
गॉनियोलेक्स, बेटा गॉनियोलेक्स वो फंगस है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी, जो बेटा किसके लिए, रेड सी के, रेड टाइड्स, समुद्र के अंदर रेड टाइड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट they are also killer of the fishes, means they produces a special type of toxins by which they can kill the fishes, और ये फिशेस को मार देते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द dinoflagellates। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस हियर अबाउट यूग्लिना। बेटा अगली बात जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वी डिस्कस हियर अबाउट यूग्लिनॉइड्स। व्हाट आर द यूग्लिनॉइड? Euglenoids are the special type of the protist that are partial autotrophic। बेटा इनको हम क्या नाम देते हैं? They are partial autotrophs, or we can say that they are partial heterotrophs they are found in fresh water, where fresh stagnant water, कहाँ पे बेटा, रुके हुए पानी के अंदर मिलते हैं। They don't have cell wall, they don't have cell wall। बेटा इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। यू कैन सी दैट व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द क्राइसोफाइट्स टू द dinoflagellate और डिफरेंस बिटवीन dinoflagellate टू द यूग्लिनॉइड्स। बेटा थोड़ा इवॉल्व हो रहे हैं। पूरे क्लाइमेट में हमने यहाँ पे देखा था क्राइसोफाइट्स के अंदर, क्राइसोफाइट कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक थे, प्लांट थे, फिर उनके अंदर क्या हुआ, फ्लैजिला आया, मोटाइल हो गया। अब उनके अंदर क्या बेटा हो रहा है, जैसे इवॉल्व होकर के, एक हमने देखा था कि सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, वहीं से इवॉल्व होंगे तो कुछ प्लांट बन जाएंगे और कुछ एनिमल बन जाएंगे, और उसी में से कुछ नॉन क्लोरोफिलस होंगे जिनको हम फंगस नाम देंगे। So they don't have cell wall, but they have a special type of membranes or layers that are made of protein or proteinaceous layer that is called as pellicle। What is called as pellicle? बेटा एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, पेलिकल। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, due to pellicle, they are flexible, बेटा इसी पेलिकल की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। सो वाई दे आर कॉल्ड एज पार्शियल ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाई दे आर कॉल्ड एज पार्शियल ऑटोट्रॉप्स? दे आर पार्शियल ऑटोट्रॉप्स बिकॉज व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट, 1 second, when sunlight is present, then they contains chloroplast. In presence of sunlight, they do photosynthesis. What? In presence of sunlight, they do photosynthesis and produces food. But if sunlight is absent, or no sunlight, if there is no sunlight, then they become heterotrophic and feeds on other organisms। बेटा क्या हो जाता है, जब सनलाइट है तब उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खुद का फूड बनाता है। and their chloroplast is just similar to the higher plants, but if the sunlight is absent, अगर sunlight नहीं है, then they become heterotrophic and behaves like animals। So we can say that euglenoids are the connecting link between the animals and plants। बेटा euglenoids क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। नाउ इफ वी गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ए यूग्लिना, बेटा आप देखते हैं, अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर भी हमको एक वेरिएशन मिलेगा। इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द यूग्लिना, देन यूग्लिना हैव 2 flagellas। What? It have 2 flagellas, one is long flagella
and another is short flagella. If we go for the structure of the Euglena, then this Euglena have two flagella and both are different in their shape. One is long and one is short. They also contains all the membrane bound organelles along with nucleus and a large chloroplast. और बेटा क्या होता है, एक large chloroplast इनके अंदर होता है. So the sole member of this group is Euglena. बेटा इस ग्रुप का एक जो member है, जो most important member है, that is Euglena. So I think it's all about today's class because it's going so long, and I will discuss about slime mold and protozoans in our next class. Okay, so thank you dear students.